बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस, बिल्कुल ढाबा स्टाइल और जैसे रेस्टोरेंट में मिलती है माश की दाल, उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना और वीडियो को फुल वॉच करना, स्किप नहीं करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। बड़ी ही मज़ेदार बनती है। गर्मियाँ स्टार्ट है तो दोपहर को कुछ स्पाइसी और खट्टा मीठा खाने को दिल करता है। तो माश की दाल बनाएं और साथ में तंदूर की रोटियाँ हों, उस पर देसी घी लगा हो तो मज़ा आ जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनी हुई दाल बनी है। तो आप भी इस तरह बनाएं और ये गर्मियों की दोपहर को एंजॉय करें। साथ अचार हो, साथ में लस्सी हो यानी कि छाछ हो तो और भी मज़ा आता है। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। मसाला इक्वल रहे तो बहुत ही मज़े की और बहुत ही यमी बनती है। तो मैंने आपको फुल स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है, फुल रेसिपी आपके साथ शेयर की। तो आपने जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और फुल रेसिपी वॉच करनी है। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो आपने मेरे साथ जुड़ जाना। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी।